हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग अभी कि वी ऑल वांट टू बिकम वायरल. That is one thing that I have realized in recent, that most of us, we are like making videos and then putting them on YouTube और Instagram पे डाल रहे हैं, नहीं तो Facebook पे डाल रहे हैं. इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता, नहीं तो फिर पहले टिकटॉक पे भी हम लोग डालते थे वीडियोस. एंड ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है नियरली 10 ईयर्स से, जब से लाइक पहले इतना नहीं था. आई हैव रियलाइज दिस थिंग, बट जब से ये शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट जो है वो आया है, एंड इसकी शुरुआत जो हुई थी वो म्यूजिकली से हुई थी. म्यूजिकली वॉज बेसिकली पहले टिकटॉक, पहले वो म्यूजिकली था, देन इट बिकेम टिकटॉक. एंड फिर उसके बाद जब इंडिया में एटलीस्ट जब ये टिकटॉक वगैरह सब बैन हो गए इन 2020 आई थिंक, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो टू दैट एक्सटेंट, तो उन लोगों ने शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को पुश करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया. एंड लाइक सभी प्लेटफॉर्म्स जो है दे वांट अस टू कंज्यूम दीज शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट. शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट इज लाइक वो आई थिंक दिस इज व्हाट दे से कि वो आपको एक डोपामिन किक देता है कि लाइक यू सी अ वीडियो एंड देन यू स्क्रोल, यू सी अ वीडियो देन यू स्क्रोल, एंड उसको आजकल आई थिंक वी कॉल इट डूम स्क्रोलिंग. तो ये सारी चीजें जो है अब शुरू हो गई हैं. लेकिन ये जो वायरलिटी का जो एक कीड़ा हम सब में लग गया है ना, कि पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट जस्ट टू बिकम वायरल. उसके अंदर लाइक पीपल माइट से भाई तू भी तो वायरल होने के लिए कंटेंट बना रहा है. यू कैन से यस, बट आई एम नॉट हंग्री टू बिकम वायरल. मतलब मेरे को ऐसा नहीं, बट आई नो कि लाइक not many too many people actually watch my videos. It is just like me just ranting about something that I feel is happening, and I just want to give my opinion. It is okay if somebody doesn't want to watch my opinion and they want to watch somebody else's opinion. That is totally up to them, and being a human being, that is okay. Like, we all have our opinions. It is not necessary that everybody would be aligned with our opinion. So वो एक बहुत बड़ी बात है. बट हाँ, वायरलिटी के चक्कर में आई हैव सीन दैट पीपल आर जस्ट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट, एंड some people are just creating skits. Some skits are actually very good, they're very creative, but some people are just creating because they saw somebody doing it and then they they just copy them. And तो वो फिर आई डोंट थिंक सो वो ज्यादा दिन तक चल पाता है. देन यू डोंट बिकम वायरल, एंड देन स्टार्ट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनिशियली उनको जो है बहुत सक्सेस मिलता है, उनका कंटेंट जो है वो काफी अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो कंटेंट रिपीटेड हो जाता है. सो लाइक उनका व्यूअरशिप गिरने लगता है, उनके लाइक्स गिरने लगते हैं, उनके कमेंट्स गिरने लगते हैं, एंड देन दे गो इनटू दैट डिप्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग कि ओह मेरा तो वीडियो नहीं चल रहा है, पीपल आर नॉट लाइकिंग द कंटेंट दैट आई एम मेकिंग, एंड देन इट बिकम्स a black hole. Then you will do any kind of a content. You might even कुछ लोग होते हैं जो कि अपना पूरा कंटेंट का बेस ही चेंज कर देते हैं. पहले वो बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट बना रहे होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट स्टार्ट मेकिंग दैट स्लीजी काइंड ऑफ कंटेंट, एंड देन फिर वो एक
एक ना वो that I'm saying is a black hole. Then when you enter it, then it's no coming out of it, because at that point of, because like people do like to watch that kind of content, and unfortunately lot of these platforms, be it Facebook, be it Instagram, they do allow to a certain amount of nudity on their platforms. Until unless there is a regulation by the government or they get caught by the government, they are absolutely okay with it. Those kind of content creators become very much popular, but unfortunately it has its repercussions in real life also. So when these kind of things happen, then of course हम लोग सोचते हैं कि यार ये मतलब like why are first of all why are people being pushed to make such kind of content, and then secondly why are these platforms also allowing these kind of contents to be published on their platform. तो ये एक बहुत, I think as a society we need to think about this thing, and we need to, and I think the government also needs to regulate the kind of content that these big platforms are pushing, like platforms like Twitter, platforms like Facebook, Instagram, YouTube. I think has a very strict policy when it comes to nudity, but platforms like Twitter and Facebook, and to some extent Instagram, they have, I think they have very loose guidelines when it comes to nudity. You can't show total nudity, but yeah, there are ways of showing nudity, and people are actually doing it. So I think in order to become viral, people are now doing all these kind of things, but they don't realize it that in the longer run, or uh, in a society, it not only impacts the society, but it comes around and it also impacts them in a very very bad way. So yeah, becoming viral, I understand, is like everybody's goal, but we should try our level best not to get into that filthy mug of creating filthy content just to get viral, and then face some ugly repercussions of it. That is what I feel. I don't know what about you. If you feel the same, or you think that no, everything is fair if you want to become viral, do let me know in the comment sections.